Hello students, this is Atul Dhika. I'm back with this new video which has been requested by so many students mentioning कि सर हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है, क्वेश्चंस और आंसर्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से अपने आंसर्स फ्रेम करने चाहिए, हर किसी का बैकग्राउंड अलग है, so किस तरह से we should be giving the answers we'll see in this video. Remember, I'll be recording this video in both Hindi and English in the same video, so I'll be using English and Hindi, which is English, but make sure when you are writing your answers you are, and not even writing, when you are remembering also, remember them in English, because जो interview होता है the mode is always in English only. So let's continue. So myself Atul Dik, I was selected as income tax inspector SSC CGL 2006. I'm Bachelor of Technology, Electronics and Communication, MSc Telecom, MBA Project Management, have so many certifications. PMP, if you see here, is the um, certification, highest certification for project managers in the world, and teaching is my passion. That's why you're seeing all these videos. Let's continue. Um, so this video, let me give you a quick overview first. क्या करेंगे इस interview में? We'll go through the interview questions. What I've done is I've given an overview of the questions. क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह से उनके आंसर्स देंगे. अब सी टोटली इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, बेस्ड अपॉन योर बैकग्राउंड. कोई बीकॉम है, कोई ग्रेजुएट है, कोई आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है, किसी ने कोई स्पेशलाइजेशन किया है, कोई गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू दे रहा है. But the answer will be dependent completely on your knowledge and your subject matter expert. Hence, the questions and the answers might vary for you. So please select and choose your answers accordingly. अभी के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ विल गोइंग थ्रू अ पैटर्न. रिमेंबर, अगर आपने पैटर्न फॉलो कर लिया तो दैट विल बी ऑल helpful for you. Before going into an interview, before even going for any interview, what you need to do, um, basically your attire. See, attire is your जो आपकी वेशभूषा होता है, जो आप पहनते हैं. So what is your formal dress? How are you looking? So you remember, आपने सुना होगा कि your looks does matter a lot. But when you do talk about your knowledge, that actually overcomes everything. So first impression, make sure that your first impression is good. Yeah. And when first impression comes, it kind of sets the tone for your interview. आप अभी पिक्चर में देख रहे होंगे. What I've written is golden rules here. So belt with boots, which is black belt and black boots. अगर brown belt है तो brown shoes होने चाहिए. Shirt with socks. तो आपके शर्ट का कलर है वो पॉसिबली मैच होनी, सॉक्स से जरूरी नहीं कि मैच ही हो, बट लाइट कलर का चलेगा. Now shoes must be polished. This is very very important. Remember, you're not wearing the sports shoes or anything. It should be formal shoes. Try, preferably black shoes. And if you're going for a experienced interview, make sure that you're going for wearing good suit or tie or something. It should not be dusty. गंदे होने चाहिए नहीं है, कीचड़ नहीं होना चाहिए, dirty. And if you see this picture, don't wear a t-shirt, don't wear a hat. Always be enthusiastic. आप एक handshake कर सकते हैं सीधा जाके. This will be very very helpful. Yeah, attitude does matter a lot. Let's go to the first question. So first question, see, question, एक question में मैंने तीन question इसलिए रखे हैं क्योंकि as I told you in the beginning itself that it depends upon your background, the way you want to conduct or you want your interview to be conducted. Yes, it's purely dependent on you, but there are set sort of questions which every interviewer will ask you, no matter if you are a fresher or a pass out or an experienced candidate, or you're going for a defense or any you know government job exam interview. It will be all no more or less than the same. So first question is, tell me something about yourself. अब देखो, पूछते हैं कि अपने बारे में कुछ बताइए. Would you like to tell me something about yourself? क्या तुम अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो? Describe yourself, या अपने आप के बारे में कुछ explain करो. Can you give me a brief introduction? um, the way it should be, you should tell your name first. Tell where you're from. Don't overstate that you're from so and so street and so village and so part of the world. Just tell that you're from this location. Now talk about your credentials and your education in short. Remember, if you are a fresher, it means a lot to you. Give the details about any achievements also if you have done. आपने कोई डिग्री की है, कोई स्किट किया था, कोई प्ले किया था, which you were leading. That will be really helpful.
और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस इफ एनी। फैमिली डिटेल्स कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प, छोटा रखिए। देखिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिख दिया है सो दैट इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स। सो इफ यू आर मेकिंग नोट्स, pause the slide and take note. The way we'll be doing is I'll be telling you the question first, then I'll be giving you the possible answers which you can choose from based upon your background, what you're doing and what you are going for the interview for. Yeah. And then I've given a possible example as well, which is picked up from my own examples. So the good answer would be, my name is Atul Tika. I am from Khawaspo, Gurgaon. I've done, so I could have just said I am from Gurgaon itself. I've done BTech, MSc, Tech. See, my degrees are so much, so I have to just cut it off and then I tell that I have a professional with 12 years of experience and I've done this and this and I've worked here and this company and that company. I'm married and I have a kid. So this is a short and crisp answer, but for fresh graduates or are really fresh in their experience, like below 5 years, you can just continue with this one. All right, let's jump to the next question. Why do you want to join us? क्यों आप हमें join करना चाहते हैं? Why do you want to work with us or this company? Question दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है, आप हमारी कंपनी के साथ ही क्यों काम करना चाहते हैं? Or if you're going for the you know अगर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स के लिए आईएएस, एसएससी या बैंक पीओ कोई भी एग्जाम उसके लिए भी जा रहे हैं तो भी वो पूछते हैं कि क्यों ज्वाइन करना चाहते हो आप आईएएस, क्यों एसएससी ही, क्यों बैंक में ही आप नौकरी करना चाहते हो। और देखिए इस आंसर को आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि आंसर आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया हुआ तो इंटरव्यूअर विल पिक यू अप ऑन ऑल द पॉइंट्स व्हिच विल बी स्पीकिंग। जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए रिमेंबर यू हैव टू गो थ्रू योर रिज्यूमे फर्स्ट, व्हाट यू हैव रिटन, every detail minutely will be prepared. That is what is expected. Possible answers, बताइए कि मैं फॉर द रोल, बताइए कि क्यों आप यहाँ, फॉर एग्जांपल आईएएस के लिए अलग आंसर होगा, बैंक के लिए अलग होगा, डिफेंस के लिए अलग होगा, which I've written here. For IAS, UPSC, or SSC, you will get a chance to serve the nation directly and will be able to get yourself included into the nation building activities, which has always been your goal and passion. Remember, आपका टोन होना चाहिए ना, your tone and body language, this has to be in sync, because आप जो बोल रहे हैं, जो कहना चाहते हैं, that has to be conveyed from your body language as well. सी यहाँ पे अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या चाहिए कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका ड्रेसिंग सेंस है, आई कांटेक्ट है, राइट पोस्चर है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। फिर आप बताएंगे कि क्यों आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं, कि आप भारत राष्ट्र के निर्माण के कार्यों में सीधा भाग ले सकते हैं और ये जॉब एक ऐसी जॉब है जो आपको सीधा उस एक्टिविटी में पार्ट लेने के लिए आपको वो रोल प्रोवाइड करती है, वो प्लेटफॉर्म देती है, and hence this is your preference. For defense, it is a white collar job, which has always fascinated you, and I've always given this answer. And it is really a complete package which you will get out of which includes job satisfaction, respect you'll get. आपको पता है कि डिफेंस के लोगों को कितना respect है, the highest respected people, most respected people in India, serving the nation, and also secure a job to help me and my family financially. Remember to always give the honest answer. Okay, so honest answers are really important because the interviewer जो होता है वो एकदम से पिक कर लेता है कोई भी क्वेश्चन जब आप बोलते हो, उसका आंसर जब बोलते हो. All right, the one of the quick examples which I've given here is, sir, ma'am, remember to give respect. Your or this company, the way you would want to start is completely dependent upon you. Remember, this is one of my examples which I've written. You can change the wordings according to your own example, and hence pause the slide, note down everything which is written here. आपसे specific जो है उसको note down करिए. So the question is, the right answer would be here is, the company is a big brand in the field of technology and it will be absolutely fantastic to be associated with such a great firm. You can just mention that I was going through the company information and this initiatives and values that the company stands for. They do match with what I have always been looking for. Here I'll be able to showcase the management skills and eventually contribute in the growth of the company. This is a kind of short and crisp answer which I've prepared. Now let's move to the next question. What do you know about this company? क्या जानते हैं आप इस कंपनी के बारे में? क्या आपने इसके बारे में पहले सुना है? Have you heard about this company before? Do you know the social cause project that is already going? See, आपको जिस भी कंपनी के बारे में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, be it
आप एक्सपीरियंस्ड हैं या आप फ्रेशर हैं या आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में उस कंपनी या फिर उस बैकग्राउंड के बारे में जरूर पता कीजिए. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन जस्ट ऑलवेज गूगल इट, यूट्यूब इट, ग्लासडोर पे जाके सर्च मार सकते हैं. लिंक्डइन जो एक लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल सोशल मीडिया कह सकते हैं जहाँ पे लोग अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाते हैं. Glassdoor is a website which will give you the real time feedback of the candidates जो उस उस जगह के छोड़े होंगे. But ये सब these are all specific to the private jobs. But if you're going for the IAS, SSC or other examinations, then you can search for the background कि कौन head है SSC का, कौन IAS का head है, क्या 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 उसमें changes हुए हैं, कोई कमेटी आई थी, कब स्टार्ट हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सब इम्पोर्टेंट होता है. राइट. डू सर्च. आप देखिए अगर कंपनी के बारे में देने जा रहे हैं तो सर्च करिए हमेशा कि कौन सीईओ है, कंपनी का हेडक्वार्टर क्या है, क्या बनाती है, क्या करती है, मेजर. रिमेंबर आपको ज्ञान पूरा पूरा ऐसा उसके बारे में ज्ञानी नहीं बनना है. यू जस्ट हैव टू हैव सम बेसिक इन्फॉर्मेशन. एक वन पेजर नोट बना लीजिए कहाँ पे है, क्या करती है, कंपनी के मेजर काम क्या क्या है. अगर कोई रिसेंटली न्यूज़ में आया है कुछ भी उससे रिलेटेड वो याद कर लीजिए. एंड उसके सीईओ सीआईओ के नाम्स. दैट विल बी सफिशिएंट. So the possible answer which I've written here is this company is the biggest brand in technology and their project in mobile technology is absolutely awesome. Remember यहाँ पे मैंने mobile technology वाला mention कर दिया है. Now this will give me an edge कि मैं पढ़ के आया हूँ. The way this company is doing work on social and environmental front is helping a lot of communities. The employee satisfaction and work-life balance shows that the company do invest a lot in their personal and professional growth. Remember, employee satisfaction is important life में. And hence remembering की और बताना इस बारे में it's very important. Let's move to the next question. What are your strengths? और टेल मी एनी थ्री क्वालिटीज. बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है, किसी भी तरह के इंटरव्यूज में डेफिनेटली पूछा जाता है. क्या क्या आपकी क्वालिटीज हैं, आपके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग करती है. अब देखिए यहाँ पे मैंने फिर से वही किया है कि मैंने अपने एग्जांपल्स लिए हैं बट मैंने कुछ और भी इंक्लूड कर दीजिए. आपके लिए बिल्कुल अलग हो सकता है. सो यू कैन राइट डाउन ऑल दोस आंसर्स. आई ऑलवेज डू व्हाट कम्स नेचुरली टू मी. देखिए जो नेचुरली आता है वो आंसर बोलना चाहिए, ना कि बनावटी. बनावटी होंगे तो पकड़े जाएंगे आंसर्स. So I always talk about I'm very honest, I'm hardworking, working, highly adaptable. So पहला मैं किसी भी सिचुएशन को अडेप्ट कर लेता हूँ. आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट. आपके लिए अब ये भी हो सकता है कि यू आर रिजल्ट्स ओरिएंटेड और यू माइट हैव वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड. बहुत अच्छा पॉइंट है. आप बोल सकते हैं टीम प्लेयर इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. सेल्फ मोटिवेटेड हो ये भी बोल सकते हैं जो आप क्योंकि फ्रेशर्स के लिए सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनके पास एक्सपीरियंस तो होता नहीं है. Very optimistic. Again, these points are almost the same. Positive attitude or optimistic. Humble is again one more point. Remember, humble is really really good point. अगर आप include करना चाहें तो, क्योंकि आप जब आप इंटरव्यू देंगे तो उसमें पता चलेगा कि humble होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक टीम में, इंस्टेड ऑफ नॉलेजेबल होना और स्मार्ट होना. या possible answers here. See, before I move, I can tell you the hard working. In qualities पे आपसे क्रॉस क्वेश्चंस भी होंगे. What do you mean by hard working? बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग हार्ड वर्क भी करते हैं. There is a very good saying which I always follow that if you cannot, if you cannot beat them, then at least outwork them. से हो सकता है कि हम उनसे नॉलेजेबल भी ना हो, उनसे उनको यू नो हरा भी ना पाए किसी और को, अपने कंपटीशन को. बट यू कैन ऑलवेज आउटवर्क देम. आप उनको 6 घंटे में कोई एक काम कर सकता है, आप उसको 8 घंटे करिए. यू नो आप उस टीम में मे बी 12 घंटे 15 घंटे जरूर लगा सकते हैं. दैट इज हाउ यू कैन बी सिटिंग आउटसाइड द क्राउड एज वेल. A possible example here is I'm a very hardworking and honest person. I can adapt according to any situation. I have positive attitude towards each aspect of my life and career. So मैंने बहुत छोटा and simple सा आंसर किया है. Remember इसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन जरूर होंगे. So prepare yourself. हाईली अडेप्टेबल का मतलब क्या होता है कि मेरे को कोई भी सिचुएशन दो, हाई प्रेशर सिचुएशन हो, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा भी हो, टीम कैसी भी हो, आई विल स्टिल बी
working and giving you the results. That is what all matters at the end of the day. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. व्हाट आर योर वीकनेस. अब स्ट्रेंथ आई है तो वीकनेस भी आएंगी, पूछेंगे आपसे जरूर, ये भी आपको पता होना चाहिए. और आज के टाइम में उसको बहुत सिंपल वे में पूछ लिया जाता है, व्हाट कैन यू इम्प्रूव इन योरसेल्फ. आज के टाइम में कोई सीधा ही नहीं बोलता कि भाई क्या कमियां हैं तुम्हारे अंदर. तो बोलते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो तुम अपने आप में इम्प्रूव करना चाहोगे, जिसमें तुम चेंज कर सकते हो कुछ. Again, मैंने वही किया, मैं my examples, and then you have you can I've given you a list of possible answers which you can choose. Very simple answers would be you cannot lie. Many people who they are not good at networking. They can see that you cannot say no to any task. This is one of my problems which I always follow. But see, this is आपको यहाँ पे क्या करना है. What you have to do is you have to choose very wisely the weakness, because the weakness is something which the interviewer is looking to find out something which you can build upon. क्योंकि बाद में आपके जब PDPs होंगे, साइकिल्स होंगे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, तो वो आपको बताएंगे कि you can work on this point and hence it will bring out the best in you. You can say that you are not a good leader as of now, but remember in the freshers पे आपको कोई leaders देखता भी नहीं है. उनको लीडरशिप क्वालिटीज चाहिए, सिर्फ क्वालिटीज चाहिए, लीडर्स नहीं चाहिए. लीडर्स वो बना सकते हैं बाद में. तो वीकनेस ऐसी होनी चाहिए, इंप्रूवमेंट पॉइंट ऐसे होने चाहिए विच कैन बी वर्कड अपॉन. फॉर एग्जांपल, you cannot stand in negative. This is a very very good point. But यहाँ पे आपको क्या है कि you still have to work with them, you still have to follow them, you still have to give results and work with them collaboratively. Hence, this is an art. Develop yourself to make sure that you're not affected by anything, even if something is not going right. All right. This might be shyness. जो कोई लोग you know, कहीं पे भी अपनी बात शुरू नहीं करना चाह सकते हैं या फिर चाहते हैं. मोस्टली रिजर्व्ड एटीट्यूड के होते हैं. कुछ आउटस्पोकन होते हैं, कुछ बहुत ही शाय होते हैं. So it doesn't matter. Time management is something which I have always used as a very good point. Now, time management doesn't mean कि आपको 24 घंटे आप मैनेज नहीं कर सकते. It means that what I've written here is the example. I find it difficult to say no to any task, and that create extra work for me. And eventually, my work-life balance gets affected. I cannot stand in the company of people who lie and cheat. Remember, मैंने एक क्या किया है, टाइम मैनेजमेंट को मैंने यूज़ कर लिया है अपने प्लस पॉइंट के लिए. मैंने बोला कि आई कैन नॉट, क्योंकि मैं नो नहीं कह पाता हूँ किसी काम के लिए, तो मुझे एक्स्ट्रा और काम मिलता है, और काम मिलता है तो मैं ज़्यादा देर काम करता हूँ, ज़्यादा देर काम करता हूँ तो क्या करता हूँ, घर पे टाइम नहीं दे पाता हूँ. एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ अफेक्टेड, राइट. एंड दिस नाउ, इसी अगर यहाँ पे देखें तो दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट, not a negative point. You have to be really careful here. Okay, so you can use all these points. I think before you move forward, make up your qualities and weaknesses. You can stop here as well.